도마 서브 번나마 선데스텔 쉐다 안테린 미틱주 우르투 레반키 서브 분조 톨레타 그리 대만주 우르투 레반키 지게긴지 공로사 이시쇼 긴지 레버 공로 트리 주죠 긴지 레버 공로사 주르초 남투 게테이 미서브 분조기 조치 모두 쉐라 당보들이야 아니 우르투 지게긴지 초니 모두 숨쉬다 그리토레 서브 세자탕 단진남들 조장 나이 대참례가 아니 모두 긴지 레버 나머지네 림신 개발계다 아니 이 토레 서브 세자탕 단진남들 조장 나야 이 제례 아니 지워지는 게 주주 샤유 아니 지워 나이까지 아니 서브 번호 수수 센다 안다는 시 서브 사강 관리는 모두 나로는 쉬니 아니 지워 강다 두두다 안티 서브 현조기 서브 세자베 제와 이 개발 전화는 쉬니 아니 딱 성능이 너도 가봐 자기 투시 마려서는 쉬니 아니 딱공 이거 약간 미치겠는지 저리야 대리사고 현조기 운동하는 쉬 투시 도만델이야. 여기 라는에 우리 진호 가서 경고 좀 쳐려야 구자 오늘도 피부터네 엔터리데 살고 봐. 남을 게 창말이야. 자제 섬지다시를 쉬에 토네. 아니 우유들랑기 살고 세다디 마 도장 쉬쇼지. 우유들랑기 살고 세다. 잠닝 사조 간산네 센시 나시 야채 별이 윤단 남았다. 살고가 남았다. 대신 배된토 야교르나게 지게 영어리야. 유미틱수기 유들레간데 자체 섬지트실레 슈규인. 도마 유미틱수기 유들레간다. 산내 유들레간 남네 전주 비미짜림다. 전주 비미 유두 딕시 공대. 지로 니도 니슈 서앙아 저주르 유미틱수기 시종다. 그미만지도 갑쪽게베 유두 주무 대신 당대 단단념 라원 찍인가 룩규 최선 W 상매 고백마세 신 롱아리 참 외두 주면 뒤색 케기 여벌 대링 레사 민말기 뒤산 담뒤 우유들레 한네 딜르 사글렌조 토마디 뒤공 슈된 계지 된진 카직 또 모두 단세라 슈규 당보 전주 비미 차림 리우게베 던제 고든베 낭세 니베 까바토 전주 비미 외두 직시 리우니바 던제 나바 낭세 수마 낭세 시경도 지득이 외두 남고에 까 외두 리름세다 지아바네 무시 두데 세다 마체파 기드링 외두 레한라 외두 겐지 레바 니 고바 셰베 공대신 지로 니도 니자마 저루르 비미 직수기 시경다 비미 지드 껍쪽게베 ödü cemil lerim tiçe 지수 스리유리 초당 중재 수바 나서 최대 초 남니라 외두 겐지 레바도 고샤 나와다 지로 니도 니자가 나와 주베 체직 레사 학배인 최대 팀시가 체베 든 레쿠르탄 뷰탄다 외두 레림 고주 슈바니 코니 라 유드 레한에 참지트실레 슈류인 니바 지로 니도 니자가 저루르 비미 직족이 시경다 비미만 지도 갑쪽게베 외두 점을 내림 세다 니 차직 전주 비미 자림다 전주 비미 외두 직시 공대 대링 지로 니도 니자가 진다 주베 체 뉘닌 지로 니도 니자가 저루르 비미 직족이 시경다 비미만 지도 갑쪽게베 외두 점을 내림 세다 슈류인 대양 외두 내림 땜베 슈바다 지로 니도 니자가 저루르 비미 직족이 시경당 비미만 지도 갑쪽게베 먼저 외두 지로 니도 니자도 나와 니베 체직 그래서 니마당 무시 외두 지로 니도 니자도 나와 시베 체 니자도 그래서 니마체 소소 비미 두드 용수
산에 소소 두림서구 टाइम 좀라 시베 닝게 두지라 제규 두제 땡게 슈베 세라 슈규 니자니 다르지로 니도 니자가 저룰레 외두 전부 온도다 응시 레림티앙 응알람신 베미 직주기 시정당 베미만 지류값 쪽에 베외두 뒤지라 경유 땡게 중투버니 갑주든 베미만 지류 렌존네 갑쪽에 베미만 지류기 외두 땡아 대 응안 초베 지면 공시 랍친 제버 유들 하네 이랑 로지 수준 니자숨 지로 니도 니자가 저르르 시지니게 외두 준비 별자니 나 베인 네 별로베펜 셰인베 대미 조니 베미 직디기 오당 직디기 니도 전투도 시긴 니자시 알람신 유들레간에 외두 전부 뒤도 죽규 최선 때문에 여버 이제 망조 내경 슈고카 팀직당 상주당 팀배 낭톱 교육 전주 배미 외두 전부 대신 마오 배댄시 레드 개강 신도 처벌인배 제그 별이 용에 초롱 차단 매배도 외두는 차시 시규 내기닝고인 니자가 전주 배미 외두 디시 된전 줍딘바 좁게 니슈 니자직 제게 낭세터 에펜베 민숑 탭그 슈조테 산에 외두 겐진 용라 딕셀터 에펜베 민숑 무여카 시송 닥셰당 산에 소소 외두 탭게 싱가라 결십 주직당 지로 니도 니자가 나와 주베 세게네 나와 죽지 베세 게팔 에펜베 민숑 탭그 녜발 죽딜 투바차구 니자투 전주 배미 외두 디시던전 쪽에 나세 시바다르 지로 니도 니자가 나와 죽지 베세 니작솜 팔 벽이 유미 랑로 쪽에 리부 로릭남 민숑 탭게 초바인 학벌 달라 정의 비법 지로 니도 니자도 나와 숨베 세 숨주 소직 팔 장부 심하고 외두 톱단 램버 산에 강도 팩장 자데 락텝 냠켈 거버니 내기닝보인 니자드 전주 배미 외두 직시 된제 주주 립드 낭세 시바 낭세 시종기 의시 니레 마뇽와 세다 제그 셰세바다 배미 직주기 시종기 의시 세다 슈족테 딕술신 시종기 원데 요톱 코네 앙림 제도기 의시 유미수 의시 니 등규 세라 제규 타주 제버인 니자게 전주 배미 외두 직시 리우시베 된제 숨주 소비 낭세 배미만 지두기 용콩당 자보르기 장세 벽이 서구 초가 레르네 외두 제베 지두 포모 케메 주레당 대낭 뇽다르 배메 니레고 닝마당 거주 사자 게루 용중 변제 나보 레르네 외두 제베 지두 니레당 장어리는 로어리 künede pemikone ödü çebe cidüni Europe Afrika künede pemikone ödü çebe cidüni gabel tuksum pübe Asia Australia künede pemikone cidü cikce pemiman cidü ki zambor şibju şena niyebeyin ni bu tale ödü çembe kap eşir şugen zobadan gece manzo ne ödü dikşir tunan yebar nangşo yomadan habar dikshi dönze nishu tsapshi dan tsenga ni la mixe tusap nange ches ni sa chu senje bemi ödü dikshi zor gürbe to ödü dan debe zanzin lamden kuykap dönzen chushi jenshik kyang sudu tembe chüyebe gece manzo ne kechi dönje to tunan yebar nangu ni sa chuchi dengi jar jizo ki kange chede shikni genkur kayam mebe kabardan jizo ndalam so belogi nemba mimbe nezu kabelgi jizo tukshidang. Pimi chikdila nezab ndonyela song, gache mangzo ne goyme token rigla umakorwa toksuyenda, yosan dube chara damzing yabar nanggo. Niza chungi, dine sani vedu legan kaadan gache mangzo la vedu dande ve ledun nam diktun tsakzu yontab su, chilo nido nizanga nawa chukjibe tse chungzhu nin,
산내 외두 겐진 넘버 sab종식 고디 슈규당 초송 위내 외두 겐진 숨 산내수 체자르기 망조라 외두 직시당 전진 남대소 오저 슈규니 니자 조송 산규르 귤람카니 망조에 까바시버 문진 슈바탄 모여 내주남 시림 망조라 뒤도 큐트베 미 믹셀 누바다 랭게 요바신 지로 니도 니자가 저줄르 시진이 그 외두 첨별 예림갑 망조라 멤베 내주 캬베 자제마 나웨 이제 슈규니 니자 주시 내가 지로 니도 니슈 니자직로 시진이 그 외두 첨별갑 잠링 총 용라 또이 내림 캬베 슈전 조심에 자다 강행고 ödül letöng ka lektuk tubani kap dei ödü genzi nambe zö zamlin yutu ka nishzaru na sane ödül lega ngapchu ngapye nang sane ödü genzi nambe gegur cheshe to chomi da suba leje che dom tang nidong yame chupshida 대신 범위 직주다 범위 망조 니경 강에 두마 동랭기 두도 ödüllerin 차주 nga 죽도바테르 제 참머리랑 이랑 아주 쉬주인 니자 정아 초수 달래 지로 니동 니 저루를 외두 제명값 야제 망조네 외두 레든 차주 용래 처루냠대 용외 비규 슈다 쉬신예 다들 최대진이 겸내 지로 공사 경구 주무초 구제 샤베 결결 땡지 투비셰데 타다 륜기 두바다 베된 된다 뉴도 세바 딜로 범위 직주네 공사 경구 주무초 구이 고대나 거딘 제den기 잠젤로 슝제 송지 슈된 캐버신 중규르 시지 외들레든 토다 발숨 레둑기 야외게베 최진도 결베 면든 슈주 체기 세라수 유들레칸네 지로니도 니짱한 나와 주베 체 듄라 데네 레림 십다 년도 슈야니 지로니도 니짱한 나와 주 니도 니저루르 비민 직족이 시경기 외두 체면 뒤세 당 레림 때문에 당고 외두 레드 제조당 레림 때문에 리우미 산에 칼에 동규 뒤세 니도 니저루 나와 당비 체니 니바 공세 국가 산에서 조규 뒤세 니도 니저루 나와 당비 체 숨네 니도 니저루 나와 당비 체 중이 바 산에서 망조 뒤좀다 지다 제규 뒤세 니도 니저루 나와 당비 체 쪽숨네 니도 니저루 나와 당비 체 니자구 ödük dönze nişu zapşi nangse dübe kaba kondenwo ödü tüzeki nidan ni gone ödü masim basera chesam jogwe shiba pemi dikzu sigyongi ngonje ödü cheme tüze nido nizaru davani be chechik ngaba sane suzu ngonje ösho tangsher gozu chagyu tüze nido nizaru davani be chesum ösho tangsher chodumdan ngonje ösho chonsong desumgi nedan 타면 죽제 의들 레간도 뒤가 능수 피조 투바 괴주 뒤제 니도 니자로 나온 입에 체 신네 니도 니자로 나온 입에 체 죽직 dumba 산에 칸네 의미 초동 조데남 유네 ngāgu chagyu 뒤제 니도 니자로 나온 입에 체 중니네 니도 니자로 나온 입에 체 죽시 게바 의들 레간네 원주 의쇼 장시에 초동 chagyu 뒤제 니도 니자루 나온 입에 체 정한네 니도 니자루 나온 입에 체 니잡시 구바 의들 레간네 원주 의시 용접 세다 저규 두제 니도 니자루 나온 입에 체 니쟁아 주바 산에서서 원주 의시 세다 동체 당 의시 의미 세다 마셰바 딕셀신 닌단 숨주 저규 두제 당 뒤 대ring 산에 의들 레간 수수 캬공도 öşir şugen nambi logyudan nyeja gibi çevar sönace re dülengi üdülegandu pügöbadan öşir şudün merik ne honşo pügü tücü nido nitsaru dawa nibe che nitsaru ne nido nitsaru dawa sumbe che nitsabgü çucuba üdülegan ne oşi öşi seda çegü tedi tücü nido nitsaru dawa sumbe che nitsabge ne nido nitsaru dawa shibe che ni juniba ödül lekanı öşi sera çegü tüzü nido nizaru daşibe tsesum çoksum ödül lekanı öşi sera tang öşo sanesu demdongi goryun tüzü nido nizaru daşibe tseşine nido nizaru daşibe tse nisasum
ödik tönze nitsapshi nangse dunbe kaba kondeng wo ödü tüzegi nidan ni gone ödü masin bar seda chezam jokwe chushiba pömin dikzu sikyong gi ngöshi ödü chembu tüze nido nitsaru dawa shibe tse nitsaru jonga sane sösö ngöshi ödü jugdi gi wesho tangsher gozu chagyu tüze nido nitsaru dawa shibe tse nitsapge 주루바 산에 소소 응시 외쇼 장실 초동당 외쇼 중송 대송 긴내당당 타면 루데 의유들 레간도 두가 능수 비조토로 괴주 뒤제 니도 니저로 나오시베 체 니자고 내 니도 니저로 나오가베 체가 줍든바 의유들 레간의 응시 외쇼 장실 초동 제규 뒤제 니도 니저로 나오가베 체 두내 니도 니저로 나오가베 체 줍시 좁게 봐 비밀 직주기 댐된 시경 살고 세다 제규 뒤제 니도 니저도 나왕아베 체 쪽숨 의들레 한네 줄로 니도 니짱한 나와 주베 체 뒤나 시경 데림 십다디 지도 넘버 줄 줄로 니도 니짱한 저루를 변미만 지도 갑쪽에 외두 체메 뒤제다 레림 템페 당보 외들레된 제조도 레림 템페 브리우미 산에 칼이야 동규 뒤제 니도 니저도 나와 당비 체니 홍세 그게 산에서 저규 되제 니도 니저도 나오던 체 숨네 나오던 체 중이 숨바 산에 망조 두존다 지라 저규 되제 산에 외디 초중네데 니도 니저도 나와 당배 체 쪽숨네 니자니 시바 당랑 의시 주슈 저규 견쇼다 슈년체 산에 외들레 한네 슈련다 칠부 저규 되제 니도 니저도 나오던 체 니자숨네 나오던 체 니자가 바바 산에 외들 레간에 당랑 요시 남 직세 차겐 창민 십주 저규 되제 니도 니자도 나오던 체 니자도 네 접딘 파 주바 겨 강시 당랑 요시 주슈 체제 랑메 치된 저규 되제 니도 니자도 나오던 체 니자비에 네 저구 외지 된제 니슈 잡시 난세 든베 카바 kondenwo uyudul ödü tüzegi nindan ni gone ödü masim par seda chazam jogo dumba ngonje ömi demtuki ödü chagü tüze nido nitsaru dawani betchik geba sane soso ngonje ödü jugdi yöshan yösho tangsher gozu ge tüze nido nitsaru dawani betche sum 고바 달라고 유시다 외쇼 장세 초동다 원주 외쇼 중송 대송 긴내단다 타면 줍제제 의유들 한도 두가 나수 교부 투가 고주 되제 니도 니자루 다원이베체 시네 니도 니자루 다원이베체 쭉직 주바 산에 가는 의미 초동 저대던 의네 응구 제규 되제 니도 니자루 다원이베체 중이네 다원이베체 쭉시 쭉직과 의유들 내가는 원주 외쇼 장세 초동 제규 되제 니도 니자루 다원이베체 쭉 중앙에 나원이베체 니잡시 주니버 의유들 내가는 원주 외시 용격 세다 제규 되제 니도 니자루 나원이베체 니자숨 쟁아 조선바 산에서 원주 외시 세다 동체 당 의시 의미 세다 마제바 득세 닌다 숨주 조규 되제다 뒤인 대ring 산에 외들 내가 소소의 캬본수 의실 슈겐 남기 로규다 니자 잡에 쳬바 촌어제르 둘랭기 의들 내가 두 뷰고보다 의실 슈데 슈드 메리네 공쇼 퓨규 되제 니도 니자루 다오니베체 니자루 네 니도 니자루 다오 순베체 니자브디 주시바 의들 내가네 뭐시 외시 세다 저규 저디 되제 니도 니자루 다오 순베체 니자게 네 니도 니자루 다오 시베체 니 정아 의들 내가네 뭐시 외시 세다 저규 되제 니도 니자루 다오 시베체 숨 주르바 의들 내가네 뭐시 외시 세다 저규 니도 니자루 다오 시베체 시 네 니도 니자루 다오 시베체 쪽숨 니자숨 ödü dönze niçapşe nanse dübe kaba kondengo ödü tüzeki nindan ni gone ödü masim par seda chasam chokwe judunba pemama chidu kap chopge bengmushi ödü cheme tüze nido niçarun dawa shibe che niçap charu chopge
산에 소소 무시 외도 죽딜기 외쇼 장실 고주 체규 투제 니도 니자도 다와시베 체 니자베 줄구바 외쇼 장실 초동당 외쇼 중송 대송게 내단다 타면 룹데 유드 레간도 두가 나순 비조 투베 그규 투제 니도 니자도 다와시베 체 니자고 네 니도 니자도 다와가베 체nga 니슈 유드 레간네 무시 외쇼 장실 초동 체규 투제 니도 니자도 다와가베 체 주네 니도 니자도 다와가베 체 주니 니자직 뎀덴 지든 남기 세슈 설거 세라 저규 투제 니도 니자루 나옹아베 체 쪽숨 니자니 뎀덴 지드 도다 소설 꿰잡던 유 투제 니도 니자루 나옹아베 체 줍시 니자숨 뎀덴 지든 남 덤뷰체 슈가도 조세 니도 니자루 나옹아베 체 숨주 타만델라 변명 지드급 좁게 베 단자 뷰시에 너유 제고 니도 니자루 나옹아베 체 숨소직 유드 레간네 지로 니도 니 쟁아 나와 주베 체 듄라 타만델라 전지 남den식 로장 쉬쇼시 지로 니도 니자루 르 페미 딕주기 시경데 페미만 지도급 좁게베 유드 제메 외시 샹켄다 대 겹겹은 남네 유드 던데베 지다 제조기 전지 남데 당보 시경단 지등기 외시 슈겐 남기 외두 개가 톱체 지자 익제 땡 공사 쪽이 꾸바당 벽 개법 전부 결달 표민 득주기 냈다 벽이 사다 속 강중 배주미죠 네봐 전주 표민 저dim당 전주 표민 외두 디시칼라 니네 지구로 유드 레간네 외두 던제베 템베 제고 람덴 칼라 샬게 투보고 숨바 외시 슈겐 남네 팀등기 권에 랑니기 랑조다 춘규 슈자 속기 담셰 저리 익전 랑니기 타자소 규디 소규 티다 낭초바인 연장 벽이 투모마인베 상죄던 게데 칸사 게르기 미시소라 꾼죄다 난구 참균을 내섰다 게다 규시 릭루 추루 초가 나은편주 미tumba 규시 롱센 탱겔 응모 꽝에 쩌낸다 규규 탑시 릭 남양미죠 시바 에펜바 게르기 랑체수 응아베 시림 톱단 칼레야 지송 녀바 제고 텔도데 짱왕엄 적슈기 고네 에펜도 주밤 미주바 에시네 치데 제도 주바 소게 릭 남양미죠 대양 의식교다 초도 셰양 교수루네 유들 레텔라 페네단데 갑조 로람 고비 비비다 갑줄 중리라 비민 딕주기 슝데 레제 찌다 학벌 유들 레절라 고완 배주 미죠 의식 교수테네 유세 유들 레텔 걸 미망다 사그 공조기 장대 민베 내주 세다 제바당 익자 덴베릭 제미죠 주바 의시 생겐 남네 내유스스 유dim로 지송당 첩시기 내단 강해진기 서구 카도 의시 슈게 민조남 네 독선 담대는 거죠 의유들 내가네 뒤뒤 남된 칼야 당내 학벌 의시 생겐당 대제 접조가 수장 의시 생겐 생기 총디 속심벌 고게 수릭 미죠 dumba öde tikji dönze nishu sapshi ben nangse dümbe nangse chösum dikzu chögyu ka shungde mayin be tsoba kidu che sutene sikyong ngam jidu yoshi kyo ter sanne kandu yang ngishu gyusumne yoshi dömbadan gyamnye seda rik teni micho geba sikyong ngam jidu su yöbe mindu mikzu ki gyamnye seda yikjatan depsho dembe kyangjar pari seda sogi nang dembel dan pardun chegen nigi mingjang ngesel kwekwe guba diksel lopta khagi nang shungdel pü temi ömi dan kyo sutene öde dan debe tida tang tamshe yikja dembe ngushu gyusumne chemijo 주바 땡급 지소 달람카 규 대응의 민배 준담 캐펠 셰
Shengyu Tamjel Sogi, Kange Tuma Yumu Shin, Yushir Shanken Namne, Hajang Yansap Jebe Kuryu Nang, Mitsuba, Cho Yone, Tusap Nangwe. Chukchipa. Yushir Shugen Nam, Sane Ka Nang, Tida Tamshe Sogi Le, Mimang Dugongi Tida Dang, Sago Seta, Yigdem Sogi, Shujargi, Neten Nam, Sane Vedu Lekanla, Kento Nyeseng Yabar Shugwe. Juniba, Sikyon Dan Jidu Yushir Shugen, Dang, Deyu Chodo, Chemiam, Yapjurwa Sutene, Ngondo Da Mushi Nikar Tida, Chatu Kyang, Vedu Dixi Dönze Nyutsapshi Nangse, Dumba Kaba, Nangse, Vedu Tuzegi Ninjan Ni Gone, Vedu Masim Par, Seda Chesam Jokwe, Shese Batar, Lubi Nimo Ter, Pembar, Gugul Shokzar, Dembe So, Mushu Gusumne, Chemijo, Chosumba, Senju Pemi Vedu Dixi Dönze, Chudu Nangse, Ngabe Nangse, Sane Soso Vedu Ledon La Deve Zonyo Rik La, Sane Vedu Lekan La, Shibjuk Tajo Che Gobe, Shikewam Chodobane, Sane Su Zonyo Chijung, Sane Vedu Genzin La Shudu Gurgule, Usu Tebil Mijo. Sane Vedu Lekan Ki Tajo Chebe Mutu Machung Tse, Vedu Lekan La Shudu Cho. Chupshiba, Konse Tönzen Kangrung Dang Geba, Ngara Choba Chung Tse, Ödü dikşi tönze nüştsena düdöngo gelsabla şigde dikön nyeje gegü çeki zanjin lamdön koyaptu ödü lehanne chilo nyedo nitsena daw jube che dünla tachna केंद्रीय तिब्बती निर्वाचन चुनाव आयोग की प्रेस विपत्ति आज विशेष विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ने वाले व्यापक तिब्बती समुदाय और सभी पत्रकार जन तथा तिब्बती मुद्दों पर समर्थन देने वाले सभी सरकारी एवं निजी व्यक्तियों को केंद्रीय तिब्बती चुनाव आयोग की ओर से सहनपूर्ण अभिवंदन और शुभकामनाएं की व्यक्त करना चाहते हैं। सर्वप्रथम तिब्बती प्रशासन के केंद्रीय चुनाव आयोग और क्षेत्रीय चुनाव आयोगों की ओर से निवासित तिब्बती राजपत्र और निवासित तिब्बती चुनाव की नियमावली के अंतर्गत वर्ष 2025 और 26 की तिब्बती प्रशासन के सिक्किम और निवासित तिब्बती संसद के 18वीं संसदीय के चुनाव को पारदर्शिता, समानता और स्वतंत्रता के साथ संपन्न कराने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। जैसे ही आप सबको मालूम होगा कि तिब्बती चुनाव का समय हर 5 वर्ष में उपकृत होता आ रहा है। आज मंगलवार के इस शुभ अवसर पर केंद्रीय तिब्बती निर्वाचन आयोग द्वारा इस साल के मतदान का पहला प्रेस सम्मेलन को कुछ महत्वपूर्ण बंदियों द्वारा परिचय एवं घोषणा करना चाहते हैं। 1. निर्वासित तिब्बती राजपथ के 8वें आदेश के द्वारा 87 के उप द्वारा 2 का तथा निर्वासित तिब्बती चुनाव नियमावली के दूसरे आदेश के द्वारा 5 की उप द्वारा 2 के अंतर्गत जब भी सिक्किम और तिब्बती संसद के संसदीय चुनाव की आवश्यकता हो तो चुनावी घोषणा के से लेकर अंतिम परिणाम की घोषणा तक की अवधि के दौरान 2 अतिरिक्त चुनाव आयोगों को मौजूदगी हो के अंतर्गत सन 2025-26 के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्किम और निवासित तिब्बती संसद के 18वें संसदीय चुनाव के लिए चुने गए अतिरिक्त चुनाव आयुक्त पूर्व सांसद श्रीमती श्री योडन तथा पूर्व सचिव श्रीमती नांगसा चोडन जी को 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय आयोग के समक्ष शपथ ग्रहण की गई, जिसके तहत इस साल के चुनाव का आगमन करने हेतु आप दोनों का एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से हार्दिक अभिनंदन बधाई देना चाहता हूँ। 2 साल 2025-26 के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्किम तथा निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं संसदीय की चुनावी प्रक्रिया हेतु आचार संहिता लागू करने की घोषणा। 2.1 निर्वासित तिब्बती राजपथ और निर्वासित तिब्बती चुनावी नियमावली के अंतर्गत आज 7 अक्टूबर 2025 के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्किम तथा निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं संसदीय
चुनावी का घोषणा द्वारा आचार संहिता लागू कर रहे हैं। निर्धारित चुनावी कार्यक्रमों के अनुसार साल 2025-26 के केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग तथा निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं संसदीय चुनाव के पारंपरिक मतदान 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन तथा मुख्य मतदान 26 अप्रैल 2026 रविवार के दिन सभी क्षेत्रों में अपने मानक समय अनुसार समान समय हुआ दिन को निर्धारित कराने की घोषणा करते हैं। वर्तमान में 2025-26 के आम चुनाव की प्रारंभिक और मुख्य चुनावी कार्य प्रक्रिया को भी पहले की तरह तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं सदस्य के चुनाव को एक साथ सुचारू रूप से संपन्न कराने के हमारे प्रयास को 17वीं तिब्बती संसद सदस्यों द्वारा पूरित कराने हेतु अनुमोदन मिलने पर हमें केंद्र तिब्बती निर्वाचन आयोग की ओर से हर्ष एवं आभार प्रकट करते हैं। 2-3 वर्ष 2025-26 के सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं संसदीय की चुनाव का नारा है, मैं तिब्बती हूँ, मैं तिब्बत के लिए मतदान देता या देती हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य तिब्बती एकता की भावना, एकता की शक्ति व समर्थन की दर्शाता है। पहले की तरह तिब्बती चुनाव आयोग द्वारा इस वर्ष के चुनाव को भी समय अनुसार संपन्न कराने का दृढ़ संकल्प है, जिस पर आम जनता को विशेष रूप से कानूनी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ आचरण के अनुरूप सहयोग व आह्वान करते हैं। निर्वासित तिब्बती समुदाय का यह आम चुनाव भविष्य में तिब्बती धर्म और राजनीतिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए निर्वासित में रहने वाले सभी तिब्बतियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पक्षपात, मोह और भय के मुक्त होकर इस चुनाव में भाग लें। 2.5 निर्वासित तिब्बती चुनाव नियम की धारा 17, 18, 20 और 22 के अनुसार मतदाताओं की नामावली पंजीकरण के संबंध में सभी स्थानीय चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नियम अनुसार मतदाताओं की पूर्व उपलब्ध नामावली के आधार पर समीक्षा करें और स्थानीय चुनावी सूचियों की पुनः जांच एवं संशोधन करें। 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 8 नवंबर 2025 के अवधि तक नए मतदाताओं को मतदान सूची में पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। 2.6 तिब्बती चुनाव नियमावली की धारा 18 की उप धारा 4 के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए तिब्बती मतदाताओं को सूची के सुनिश्चित रूप से जोड़ने का निर्देश दिया जाता है। विशेष रूप से 31 मार्च 2026 तक ग्रीन बुक थांगलांगचकदेप पर राष्ट्रीय अभिवंतन भुगतान पूर्ण रूप से जमा किया जाना आवश्यक है। अपने चुनाव अधिकार प्राप्त करने के लिए जहां भी जाए अपना पूर्ण भुगतान सहित ग्रीन बुक पुस्तक अवश्य ले जाए। 2.7 निर्वासित तिब्बती चुनाव नियमावली के धारा संसद के उप धारा 4 के उल्लिखित सिक्योंग अंतिम चुनाव के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की घोषणा की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग के मुख्य चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से संबंधित यह निर्णय लिया गया है कि नियमों के अनुरूप प्रारंभिक मतदान में प्राप्त मतों के आधार पर उच्चतम रैंकिंग प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों को ही अंतिम चुनाव के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा। 2.8 निर्वासित तिब्बती चुनाव नियमावली के धारा 37 में उल्लिखित तिब्बती संसद सदस्य जनप्रतिनिधि सभा के स्रोत और कुल संख्या तिब्बती के 2
तीनों प्रांतों के चुने गए स्त्री पुरुष निवेशित 10-10 के प्रतिनिधि और उनमें 2-2 महिलाएं होना आवश्यक है। 4 मुख्य धर्म संप्रदायों और युंगडोंग भें सहित 5 में से प्रत्येक से चुने गए 2-2 प्रतिनिधि, उत्तर और दक्षिण अमेरिका निर्वासित तिब्बतियों में से चुने गए 2 प्रतिनिधि, यूरोप और अफ्रीका के निर्वासित तिब्बतियों में से चुने गए 2 प्रतिनिधि, भारत, नेपाल, भूटान के अतिरिक्त एशिया और ऑस्ट्रेलिया में निर्वासित तिब्बतियों में से 1 प्रतिनिधि सहित तिब्बती संसद के सदस्यों की कुल संख्या 45 निश्चित है। 2 निर्वासित तिब्बती चुनाव नियमों के समय की आवश्यकता के अनुसार अनेक संशोधन पारित किए गए हैं, इसलिए सभी उम्मीदवारों और आम जन समुदाय को अनुरोध है कि यह चुनावी नियम की धारा 24 और 25 पर विशेष ध्यान दें। 2.10 केंद्रीय तिब्बती चुनाव नियमावली के आधार पर चुनाव से संबंधित 14 धाराओं वाले मौलिक दिशा निर्देशों की अलग से जारी किए गए हैं, इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण निर्देशों पर निश्चित रूप से ध्यान दें। 2.11 आज के समय में समाज की सभी समस्या यह है कि गैर जिम्मेदारी से फोन और इंटरनेट आदि का दुरुपयोग से झूठी सूचनाओं का प्रचार होता है, जिससे सामाजिक अशांति फैलने और तिब्बती एकता को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान तिब्बती जन समुदाय से अनुरोध है कि यह आवश्यक भ्रामक अफवाहों में न पड़कर सावधानी, संयम और दृढ़ता से काम ले। 2.12 केंद्रीय तिब्बती चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय चुनाव आयोगों और तिब्बती जन समुदायों के लिए चुनाव संबंधित कार्यों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए 16 नवंबर 2025 को स्थानीय चुनाव अधिकारियों के लिए एक महान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार केंद्र के 3 चुनाव उपायुक्तों द्वारा स्थानीय स्तर पर विशेष दौरा कर जनता को चुनाव नियमों की मौलिक दिशा निर्देश आदि से परिचित कराएंगे। 2.13 संचार माध्यम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के समान वास्तविक स्थितियों को आम जनता तक समय पर पहुंचाने की विशेष क्षमता और जिम्मेदारी निभाती आ रही है। इसलिए हमें विशेष विश्वास है कि वर्ष 2025-26 के केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया में के समय भी जनहित की वास्तविक जानकारियां पहुंचाने का कार्य जारी रखेंगे। 2.14 वर्ष 2020 और 21 के सिक्योंग और संसद सदस्य के चुनाव के दौरान वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के गंभीर संकट होने के बावजूद निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें उस समय के तीनों केंद्रीय निर्वाचन आयोगों के नेतृत्व में विश्व के 26 देशों के 58 क्षेत्रीय निर्वाचन समितियों के आयुक्तों द्वारा मुख्य जिम्मेदारी लेने चुनाव सदस्यों, प्रेक्षकों, कर्मचारियों सहित कुल 2014 लोगों की सराहनीय कार्य। उसी प्रकार की तिब्बती जन समुदाय द्वारा भी उस समय अनेक कठिनाइयों का सामना कर अपने समय पर चुनाव की कार्यों का सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के लिए सभी संबंधितों को हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हैं। 2.15 साथ ही इस बार वर्ष 2025-16 के आम चुनाव के दौरान भी तिब्बती जनता से चुनावी कार्यों की सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सहयोग और समर्थन देने का आह्वान करते हैं। अंत में
जगत के शांति दूत परम पवन दलाई लामा जी के दृढ़योग, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने, तिब्बत की सत्यता की शीघ्र प्राप्ति, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा परम पवन दलाई लामा जी को उनके 90वें वर्ष की जन्मदिन हेतु उनके उपदेशों का पालन और इस वर्ष को उनकी समर्पित आधारिक करुणा वर्ष के रूप में मनाने के साथ परम पवन दलाई लामा की आशीर्वाद तथा आगामी चुनाव के कार्य प्रणाली को सफलतापूर्वक पूर्णतः संपन्न होने की कामना करते हैं। केंद्रीय तिब्बती निर्वाचन आयोग 7 अक्टूबर 2025। और ये केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के 18वीं सदस्य के चुनावी उम्मीदवारों को उनके समर्थकों के लिए चुनावी प्रचार संबंधित आचार संहिता की मूलभूत दिशा निर्देश। 1. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की सिक्योंग और संसद सदस्यों की उम्मीदवार चुनावी जीत प्राप्त करने के हेतु प्रचार सामग्रियों पर परम पवन दलाई लामा जी की तस्वीर, तिब्बत का राष्ट्रीय ध्वज, तिब्बती प्रशासन का अतिरिक्त चिन्ह, तिब्बत का नक्शा आदि का उपयोग करना वंचित है। निवासी तिब्बती राजपाट और निवासित चुनाव नियमावली का अनुपालन एवं सम्मान करते हुए केंद्र तिब्बती चुनाव आयोग द्वारा चुनावी संबंधित कार्यविधि के दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। 3. उम्मीदवारों द्वारा कानूनी तरीकों से अपनी नीति और भविष्य को योजनाओं के बारे में भाषण, लेख, प्रशासन, वेबसाइट आदि के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, परंतु तिब्बत की विशिष्ट क्षेत्र परंपराओं के विपरीत व्यक्तिगत चरित्र पर आलोचनाएं, अंतर्गत सद्भाव का नुकसान पहुंचाने और विरोधी पैदा करने वाले कारक, जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रवाद द्वारा आपस में मतभेद पैदा करना, पक्षपात करना, धन और भौतिक वस्तुओं को गुप्त लेन देन और रिश्वतखोरी की कोई भी विधियों की अनुमति नहीं है। 4. मतदाताओं के व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में प्राप्त मौलिक अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। इसके विपरीत दबाव या बल के माध्यम से मतदान करने या न करने के लिए बातें करना, उम्मीदवारों को चुनाव के पीछे हटने के लिए मजबूर करना आदि की भी अनुमति प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों, दलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने चुनावी कार्यों के लाभ हानि से संबंधित प्रशासन के अतिरिक्त कर्मचारियों और विशेषकर चुनावी कार्यकर्ताओं का समर्थन या सहयोग द्वारा दुरुपयोग करना प्रतिबंध है। 5. किसी भी उम्मीदवार की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में जनता और मीडिया में असत्य जानकारी का प्रचार और दस्तावेजों का वितरण करना प्रतिबंध है। 6. उम्मीदवारों को अपने संबोधित निवास स्थानों के स्थानीय कानून व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक रूप से संवेदनशील व कठिन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को सावधानी और सतर्कता बरतना अनिवार्य है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। विशेष रूप से उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा अन्य उम्मीदवारों की सभाओं या बाधा डालना प्रतिबंध है। 7. चुनाव नियमावली की धारा 24 के उपधारा 7 में उल्लिखित 3 तिब्बती प्रांतों के संस्थाओं, धार्मिक संप्रदायों व संगठनों, गैर सरकारी संगठनों व कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी स्थान पर सिक्यों या संसद सदस्य के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करना या समर्थन की घोषणा करना प्रतिबंध है। 8. सिक्यों या संसद सदस्यों के समर्थन में किसी भी व्यक्तियों द्वारा जारी घोषणा पत्र
पत्र विवरण, सूचना पत्रों की विज्ञापनों और अन्य प्रशासनों के वितरण और मुद्रण करने वाले दोनों पक्षों के नाम और पते स्पष्ट रूप में अंकित करना आवश्यक है। 9. नियमानुसार शैक्षणिक संस्थाओं और अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त उम्मीदवारों और व्यक्तियों द्वारा चुनाव संबंधी घोषणाएं, भाषण, दस्तावेजों का विवरण करना प्रत्येक और अप्रत्येक रूप से प्रतिबंधित है। 10. वर्तमान के समय में सोशल मीडिया के जरिए झूठी जानकारी फैलाना, अफवाह फैलाना, दूसरों के नाम पर गलत बयान फैलाने जैसी कोई अनेक समस्याएं सामने आए हैं। ऐसे संवेदनशील माहौल में उम्मीदवारों को सतर्क रहने और विशेष रूप से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की आवश्यकता है। 11. उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की जनसभाओं, मीडिया घोषणाओं, प्रचार सामग्री, प्रशासन आदि से संबंधित योजनाओं का स्थानीय चुनाव आयोग को अवगत कराया जाना आवश्यक है। 12. तिब्बती और संसद सदस्यों की उम्मीदवारों तथा उनके समर्थक द्वारा प्रारंभिक और मुख्य चुनाव के दोनों चरणों में घोषणाएं करने की अनुमति है, परंतु चुनाव नियमावली की धारा 24 के उपधारा 7 ख के स्पष्ट रूप से उल्लिखित मतदान की तिथि से 2 दिन पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक सभी प्रकार की चुनावी प्रचार गतिविधियां स्थगित करनी होगी। इसलिए मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री का वितरण, सोशल मीडिया पर प्रचार या किसी भी माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करना निश्चित है। 13. निर्वाचित तिब्बती चुनाव नियमावली धारा 16 की उपधारा 5 में उल्लिखित है कि प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में चुनाव कार्यों के संबंधित विवादों की जांच और निर्णय स्थानीय चुनाव कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए उम्मीदवार या संबंधित पक्ष को स्थानीय स्तर पर उन्नत विवाद के लिए स्थानीय चुनाव अधिकारी को आवेदन देना होगा, परंतु केंद्र से सीधे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि स्थानीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए निर्णय से असहमति ना हो तो इस स्थिति में केंद्रीय चुनाव आयोग को अपील की जा सकती है। 14. उपरोक्त किसी भी धाराओं का वास्तविक उल्लंघन होने पर चुनाव नियमावली की धारा 25 के अंतर्गत उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए नियमन दंड प्रक्रिया लागू की जाएगी। Good morning, everyone. I would like to read the English version of the press. The Election Commission CTA would like to extend its warm greetings to the Tibetan people and supporters of the Tibetan cause across the world and members of media who have gathered here at today's press conference. As per the relevant provisions of the Charter and the electoral rules and regulations of CTA, the Election Commission today announced the schedule of elections of Sikkim and 18th Parliament in exile. The Election Commission is firmly committed to conduct the elections in a free, fair, inclusive, and peaceful manner. Accordingly, the Election Commission today announced the following points related to the electoral process. Number 1, in accordance with the Article 97(2)(a) of the Charter of Tibetans in Exile and Article 5, Bracket 3 of the Election Rules and Regulations, which stipulates that, quote, as and when the elections of Sikkim and members of the Parliament are to be conducted, 2 additional election commissioners shall be required, and their tenure shall be from the announcement of the start of the electoral process until the declaration of the final election results, unquote.
Mrs. Sring Yudin, former Member of Parliament, and Mrs. Nangsa Chudin, former Secretary of CTA, have been elected as the 2 additional election commissioners. They took the oath of office from the Supreme Justice Commissioner on 1st October 2025. Taking this opportunity, the Election Commission would like to extend its warm greetings to the 2 additional election commissioners. Number 2, announcement of schedule for elections of Sikkim and 18th Tibetan Parliament in Exile 25-26. 2.1, as per relevant provisions of the Charter and electoral rules and regulations, the Election Commission CTA hereby announced the schedule for elections of Sikkim and 18th Tibetan Parliament in Exile 25-26 today on 7th October 2025. The preliminary elections for Sikkim and 18th Tibetan Parliament in Exile is scheduled on Sunday, 1st of February 2026, and the final election on Sunday, 26th April 2026. 2.2. The Election Commission highly appreciates the 17th Tibetan Parliament in Exile for its immense consideration in ending its tenure earlier, which enabled us to conduct the 2 upcoming elections simultaneously. The official slogan for the 2025-26 Tibetan elections will be, quote, I am Tibet, I vote for Tibet, unquote, signifying unity and strength of the Tibetan people. 2.4. With the Election Commission firmly committed to conduct the election in a time-bound manner, it is essential that the Tibetan public fulfill their responsibilities by diligently complying with the electoral rules and observing proper conduct. As this election holds great significance for the Tibetan cause, it is utmost importance that Tibetans in diaspora participate in the electoral process in the spirit of unity. 2.5. In accordance with Articles 17, 18, 20, and 21 of the Election Rules and Regulations regarding the voters' registration, all regional election commissioners are required to verify and review the existing voters list in their respective regions. The voters' registration shall begin on 8th of October and must conclude by 8th November 2025. 2.6. As per the Article 18.4 of the Election Rules and Regulations, Tibetans who have attained the age of 18 years on 23rd November 2025 are eligible for voter registration. All registered voters must have paid their Green Book dues up to 31st March 2026. The voters must carry their Green Book with them wherever they may be in order to exercise their voting rights. 2.7. In accordance with Article 67.4 of the Election Rules and Regulations, which states, quote, a minimum of 2 candidates for the final election of Sikkim must be announced, unquote. The Election Commission has decided to shortlist top 2 candidates for the final election from the results of preliminary election, which is in accordance with the established procedure and precedents. 2.8. The Article 37 of the Election Rules and Regulations stipulates the composition and strength of the Tibetan Parliament with 10 members, including at least 2 women each elected from the 3 provinces of Tibet.
2 members each from Nyingma, Kagyu, Sakya, Keluk, and Pön religion. 2 members elected by Tibetan community in North and South Americas. 2 members elected by Tibetan community in Europe and Africa. 1 member elected by Tibetan community in Asia, excluding India, Nepal, and Bhutan, and Australasia. The total strength of Tibetan parliament is thus fixed at 45 members. 2.9. The general public and the candidates must pay special attention to the election rules and regulations. Particularly, special attention must be paid to Article 24 and 25. 2.10. In addition to the election rules and regulations, the general public must pay careful attention and strictly adhere to the Code of Conduct comprising 14 points formulated by the Election Commission. 2.11. One of the major challenges facing our society today is the dissemination of the false information through misuse of social media, which threatens social harmony and unity among Tibetans. Therefore, the Tibetan public must be vigilant against online rumors, mongering, and disinformation. 2.12. To ensure that the elections are conducted smoothly in accordance with the election rules and regulations, the Election Commission will organize a training for the Regional Tibetan Commissioners on 16th November 2025. Concurrently, the Chief Election Commissioner and additional election commissioners will pay official visits to various Tibetan communities to introduce and explain the electoral rules and guidelines to the general public. 2.13. The media, recognized as the fourth pillar of the democracy, has the responsibility to convey factual information to the public in a timely manner. We hope that media will disseminate necessary information to the public during the elections. 2.14. Despite the global COVID-19 pandemic, the 2021 Sikyong and Tibetan Parliament elections were successfully completed through the dedicated efforts of the Central and Regional Election Commissions across 58 offices in 26 countries, supported by 2,014 members, observers, and staff, along with the resilient participation of the Tibetan public. We extend our heartfelt appreciation to everyone involved in this success. 2.15. We earnestly appeal to the general public to extend their wholehearted support and cooperation to ensure that the elections of Sikyong and 18th Tibetan Parliament in Exile 25-26 are conducted successfully. In conclusion, we fervently pray for the long life of His Holiness the Dalai Lama and fulfillment of his noble wishes. May the truth of the Tibetan cause prevail soon. As the Central Tibetan Administration observes this year as the year of compassion in celebration of His Holiness's birthday and gratitude, may the forthcoming election proceed smoothly and strengthen Tibetan democracy, gifted to us by His Holiness the Dalai Lama. Now I would like to inform the 14-point guidelines
Guidelines for the candidates for the election of Sikyong and members of the 18th Tibetan Parliament in Exile 2025-26. Number 1. Candidates for the election of Sikyong and the 18th Tibetan Parliament in Exile cannot use picture of His Holiness the Dalai Lama, Tibetan national flag, the emblem of the Central Tibetan Administration, and map of Tibet for their election campaign. Number 2, by adhering both in letter and spirit of the Charter and the Election Rules and Regulations (CTA), candidates must strictly follow the Model Code of the Conduct and guidelines issued by the Election Commission for the electoral process. Number 3, although candidates may conduct their election campaigns through speeches, correspondence, publications, and personal websites, they cannot make personal criticisms, actions causing discord, religious and regional divisions, bribery, or any form of inducement. Number 4, the fundamental rights of the individual voter must be protected. Exerting coercion or pressurizing someone to vote or not to vote is strictly prohibited. Furthermore, no candidate, supporter, or anyone may solicit support or assistance related to election matters from official CTA staff, particularly election officials, by exploiting their positions or seeking favor. Number 5, candidates are not allowed to disseminate false information or distribute materials about the electoral procedures of the Central Election Commission to the public or media outlets. Number 6, candidates must respect the local laws of their respective places of residence. Those candidates based in politically sensitive regions must exercise caution and vigilance. They must comply with the guidelines of the Election Commission. In particular, candidates and their supporters must not cause obstructions or hindrance to campaign events of other candidates. Number 7, as stipulated in Article 24(7) of the election regulations, all provincial or regional associations, religious institutions, and NGOs are prohibited from releasing nominations and endorsing candidates for the election of Sikyong and members of Tibetan Parliament. Number 8, campaign materials such as announcements, leaflets, and banners for any candidate must clearly display the name and address of the person responsible for printing these materials. Number 9, in accordance with the electoral rules and regulations, no electoral campaign activities are allowed in schools. Number 10, candidates must remain vigilant against disinformation and rumors on social media platforms, etc. Number 11, candidates must inform the Regional Election Commission for any election campaign activities and that they undertake in their respective areas. Number 12, candidates may carry out campaign activities during both preliminary as well as final elections. However, in accordance with Article 24(7)(b), they shall cease their campaign activities 2 days prior to the election day until the announcement of the results. Number 13, as specified in Article 16(5),
of the election rules and regulations, disputes related to local election matters must be investigated and resolved by the Regional Election Commission. Therefore, individual candidates or their supporters may approach the Regional Election Commission to resolve disputes rather than directly approaching the Central Election Commission. However, if anyone is dissatisfied with the judgment and of the religious judgment of the Regional Election Commission, they can appeal to the Central Election Commission. Number 14 and the last. If anyone is found guilty of violating the above-mentioned guidelines, penalties will be imposed in accordance with the severity of the violation as per the provisions of Article 25 of the Election Rules and Regulations. Thank you.